Hello everyone. I hope आप लोग अच्छे होंगे and you guys are watching Asia Cup, although there are two other series which are going on. So Australia is playing against South Africa. ये one day series है. I believe 5 one day series हैं. Yes. और England is playing against New Zealand in England. So वो दोनों series भी काफ़ी amazing हो रही है, especially first match against South Africa versus Australia was really a nail biter, and in the end Australia won by 3 wickets. But again, my focus, or we are more focused on Asia Cup, and in particular about the Super 4 contest between India and Pakistan, which is scheduled tomorrow. So आज हम इसके बारे में बात करेंगे, what we can expect, what are the weather conditions, पिच कैसे हो सकती है, what can be changes we can expect in both the teams, what should be the right strategy, ये सारी चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे. But again, if you I have a humble request, please subscribe to my channel. अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं. You can share your feedback on them. इस वीडियो में भी अपने कमेंट्स दे सकते हैं. You can like this video, you can share it with your friends on different social media groups as platforms as well. But your subscription is really very important for me because मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के को अपना एनालिसिस प्रेजेंट करना चाहता हूँ. That is only possible if I have more subscribers. So a humble request, please subscribe to my channel. Thank you. Okay, so जो first contest था India versus Pakistan, it was washed out because of rain, and I'm afraid the forecast is not that good even for tomorrow's match. Again, there are a lot of factors, a lot of things which happen in the back end, but really what I believe is that ACC, Asian Cricket Council, should have given priority to ensuring that matches are happening. I mean, उसका क्या फ़ायदा अगर आप सारी प्रिपरेशन करें और there are no matches because of rain. And if you talk about Sri Lanka, so Sri Lanka में August September में बहुत बारिश होती है. People who are watching cricket from a very long time, like me, will remember 2002 Champions Trophy final, जिसमें it was final was between India and Sri Lanka. पहले दिन फाइनल में श्रीलंका ने बैटिंग की. इंडिया की बैटिंग के समय rain came, there were no game possible. Again second day on a reserve day फिर से स्टार्टिंग से मैच हुआ और अगेन जैसे इंडिया की बैटिंग आई rain came and there were no match possible. So trophy was shared. Not only this, there are a lot of examples जहाँ पे because of rain, especially in August September, match is not at all possible. Especially if we talk about Colombo, which is which get a lot of rain. तो ये सारी प्लानिंग I'm sure ऐसा नहीं है कि फोरकास्टिंग पहले नहीं हुई होगी या एडमिनिस्ट्रेटर्स को नहीं पता था कैसा श्रीलंका में what kind of atmosphere is going to be there. Option was in UAE, but they are saying that UAE is there's a lot of heat, high temperature, so possible nahi hai. So I mean definitely that is something which administrators have to decide कैसे करना है, क्या करना है. But the intent of Asia Cup was not to win, to decide who is best in the Asia, but to give valuable practice to all the 5 teams. So 5 out of 6 teams are going to participate in World Cup. और just imagine कि अगर वो सब कॉन्टिनेंट में एक दूसरे के खिलाफ अगर मैच खेलें तो कितना वैल्यूबल प्रैक्टिस they will get. Definitely other teams will be striving, teams like Australia, New Zealand, England, South Africa, they would be they would have loved to get this kind of opportunity. Anyways, अगर हम मैच की बात करें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, सो बारिश की फोरकास्ट है. इनफैक्ट it is forecasted that it's going to be thunder showers. So
let's be hopeful कि कुछ miracle हो, a match complete हो. Otherwise, it will go to reserve day. Now, challenge with the reserve day is because on the reserve day, match will start from the day, from the point match got interrupted. जिसका मतलब मान लीजिए अगर एक टीम ने फर्स्ट बैटिंग की, लेट्स सपोज इंडिया पाकिस्तान में से किसी ने भी, एंड दे स्कोर्ड 250 odd runs because of the conditions, because of the rain or whatever. Maybe rain interrupted and they ended up scoring 240 runs. So अगले टीम 240 runs chase करेगी अगले दिन in a much better condition. It can be much better condition, much better situation. So of course it will not be fair, but administrators are doing whatever they can do to ensure a match. Talking about pitch, so कोलंबो में इस सीरीज़ के एशिया कप का अभी तक कोई मैच नहीं हुआ है. आज पहला मैच होगा बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, एंड बिकॉज देयर अ लॉट ऑफ रेन विच इज़ हैपनिंग, सो आई डाउट कि बहुत ही हाई बैटिंग पिच बना पाए होंगे क्रिकेटर्स, बिकॉज इन ऑर्डर टू गेट द बैटिंग पिच यू नीड 2 or 3 days of good sunlight, बिकॉज जब तक पिच ड्राई नहीं होगी it cannot be, it cannot be hard, तब तक वो बैटिंग पिच नहीं होगी. अगर वो सॉफ्ट है, सो डेफिनेटली इट विल स्टिक टू द पिच और वो बॉल विल नॉट कम ऑन द बैट. सो आई एम एंटिसिपेटिंग बिकॉज ऑफ द फोरकास्ट कि जो मैच होगा इट विल बी जस्ट लाइक द फर्स्ट मैच बिटवीन इंडिया पाकिस्तान. जो भी टीम फर्स्ट बैटिंग करेगी इट विल बी अराउंड 260 to 70 runs, and it will be a good score if there is no rain, because अगर रेन होती है सो ऑटोमेटिकली जो सेकंड बैटिंग करेगी उसको बेनिफिट होगा, बिकॉज रेन होगी. सो आप पिच को यू कैन आप पिच को ड्राई कर सकते हो, आप पिच को तैयार कर सकते हो, बट आप आउटफील्ड को एकदम ड्राई नहीं कर सकते, विच मीन्स वेन एवर बॉल इज़ गोइंग इन द आउटफील्ड वो वेट होगी, और वेट होगी तो ना वो स्विंग होगी ना स्पिन होगी. सो इट विल बी एडवांटेज टू द बैटिंग टू द टीम विच इज़ चेजिंग. But we also need to consider that ball does a lot of stuff in Sri Lanka, especially around 8ish, 7:30 to 8:30 काफ़ी swing वगैरह होती है. But again it will be advantage team which will be chasing, जैसे हमने नेपाल वाले मैच में देखा, इंडिया वर्सेस नेपाल. There is no doubt that India would have won that match without any issue, but all the Nepali bowlers they are pretty good. अगर आप पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच देखें, so they put Pakistan in a spot of powder by taking 4 quick wickets. बाद में बाबर आजम इफ्तिकार अहमद की पार्टनरशिप थी. So they are not bad bowlers, but yes, on that day because of wet balls they were not able to do anything. So that is about pitch report or weather forecast. Talking about team, I don't think so Pakistan is going to make any change. Pakistan same वही टीम खेलेगी. Maximum I can of course Abdul Rahman will be back in the team, और फ़हीम अशरफ बाहर जाएंगे. The reason is कि इंडिया में there will be a lot of right handers, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको चाहिए to create pressure on the right handed batsman. सो यही एक चेंज होगा, बाकी पाकिस्तान की टीम में कोई चेंज नहीं होगा. दे आर प्लेइंग प्रेटी गुड बॉलिंग, दे आर प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट. अगर आप उनकी बॉलिंग देखें, सो ऑफकोर्स इन शाहीन अफरीदी, नसीम शाह एंड हारिस रॉफ, दे हैव 3 very dangerous wicket taking bowlers who are capable to take wickets on any kind of wicket. It is, of course, it is currently one of the best bowling attacks in the world, or in subcontinent conditions they are really very destructive. So Pakistan will just love to have the same kind of performance that they had in the first match. As far as their batting is concerned, they will be a bit concerned about their batting, because batting की बात करें तो Babar Azam scored of 150 odd against Nepal, and the opener Imam Ulaq is doing good. He's pretty decent batsman, but other batsmen are struggling, especially
If you talk about Fakhar Zaman, he is out of form from a very long time. That can be a cause of concern because Pakistan want to have Fakhar Zaman in top form before World Cup. Baki players, Sarfraz Ahmed, Rizwan, everyone is doing good. Iftikhar Ahmed also played a very good inning, which has somehow given that strength to their middle order, जो कि बहुत ही wobbly है कई बार. So Pakistan will play the same team. अगर हम इंडिया की बात करें, so we can anticipate couple of changes. Of course, team management and the clues which we are getting from the practice is that most certainly they are going to play KL Rahul. अब क्वेश्चन सबसे मेन है कि अगर KL राहुल को खिलाएंगे तो क्या वो ईशान किशन को ड्रॉप करेंगे, who has scored 4 half centuries in last 4 innings. He is left-handed, which means that he provides that variation in the middle order, and he's a good keeper as well. तो अगर आप उनको ईशान किशन को बाहर करते हैं KL राहुल को खिलाने के लिए, सो डेफिनेटली एक तो बाकी सारे राइट हैंडेड हो जाएंगे. पहले फर्स्ट 5-6 बैट्समैन आपके राइट हैंडेड है. दूसरी बात है कि KL राहुल is coming from a very long injury. In fact, he has not even played any domestic matches as well. जो प्रैक्टिस मैच होते हैं NCA में, उसको आप किसी भी एंगल से you cannot consider it as a match conditions की कैसे परफॉर्म किया. और अगर आप KL राहुल को ईशान किशन का जगह खिलाते हैं और फिर if fails in first inning itself, so it will put additional pressure on Rahul as well, because he is replacing a performer who is performing from last 4 innings. So ईशान किशन को ड्रॉप करना will be a suicidal. They should never do it. Even if they remember, पहले मैच में भी if not for ईशान किशन's and Hardik Pandya, India would have ended up somewhere around 150 to 180 runs, which would have been very embarrassing. तो I hope राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा ऐसा कुछ ब्लंडर ना करें. KL राहुल को ठीक है, KL राहुल should also get the same kind of treatment जो बाकी को मिली है. He has to wait for his chances. Let him sit in the dressing room. पिच में आप नेट प्रैक्टिस करते रहें, जब मौका मिले तो दिया जाएगा. A lot of people are saying कि श्रेयस अय्यर को रिप्लेस करके KL राहुल को खिलाएंगे. But again the same question. श्रेयस अय्यर का अगर आप रिकॉर्ड देखें पिछले 1 साल का, before he got injured, he was India's main batsman जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे in ODI and in including the total runs in T20, Test match and ODI. He's a very good option at 4th number. He has ensured that India won some very close matches while chasing because of his batting. Also, Shreyas Iyer is much better spin player, is much better player of spin as compared to others in the team, and I have no hesitation in saying that even better than Virat Kohli. Shreyas Iyer के पास जो shots हैं and his feet movement is better than Virat Kohli as when he is facing a spinner. तो आप ऐसे player को अगर drop करते हैं, so definitely you are creating doubt in his mind. अगर हम श्रेयस अय्यर की बात करें, so he played very few balls in match against Pakistan, but he looked comfortable. In fact, जिस ball पे वो out भी हुए, उसको बहुत ही प्यारा pull मारा था, but it was his bad luck that he could not find the right placement, and fielder just raised his hand and ball came in his hand. So श्रेयस अय्यर को drop करना भी is not advisable. आपको श्रेयस अय्यर को भी खिलाना है. So in my view, KL राहुल को बाहर बैठना चाहिए. He should wait for his opportunity. अगर definitely अगर इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट जीत जाती है, नेक्स्ट मैच श्रीलंका के अगेंस्ट जीत जाती है, so you can give opportunity against बांग्लादेश. अगर इंडिया फाइनल में पहुंच जाएगी तो आप उनको मौका दे सकते हैं. He can play one match, but in order just to play KL राहुल, आपको किसी भी और प्लेयर को रिप्लेस नहीं करना चाहिए. सेकेंड क्वेश्चन,
Our second issue right now with Indian team is शार्दुल ठाकुर. Okay. So जब आप strong teams का against खेलते हैं, like Pakistan, who is now number 2, number 1 थी, Australia, England, जिनकी बहुत ही अमेजिंग बैटिंग लाइनअप है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग है. सो यू नीड विकेट टेकर बॉलर्स. ओके. एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने काफ़ी विकेट्स लिए मिडिल ऑर्डर में. इनफैक्ट इन लास्ट 2 years 3 years ही हैज़ टेकन मैक्सिमम विकेट्स इन द मिडिल ऑर्डर फॉर इंडिया. बट with due respect to his bowling, his bowling does not look that he's going to take a wicket. Somehow he is able to take that wicket, but ऐसा उनकी bowling देख के लगता नहीं that he's taking wickets. But again, nothing against him. At the end of the day, you need wickets. कैसे भी तरीके से wicket आ रही हो. But if you compare that he is replacing Mohammad Shami, so it becomes a very big question. Because just imagine अगर आप सिराज, बुमराह और शमी को खिला रहे हैं, so these 3 players can ensure that other opposition batsmen are struggling. चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी टीम हो, इन तीनों बॉलर्स को खेलना इतना आसान नहीं होगा. ओके. देयर विल बी नो रिस्पाइट. तो अगर बुमराह और सिराज का स्पेल ख़त्म हुआ, देन शमी और पांड्या देन कम अप एंड दे कैन प्ले. सो the other argument which is given in favor of शार्दुल ठाकुर, जो मैं भी मानता हूँ कि he's a decent batsman as compared to other bowlers और as compared to शमी as well. लेकिन आप अगर वो 8 नंबर बैटिंग करते हैं, एंड डेफिनेटली हमें कोई एक ऐसा बॉलर चाहिए 8 नंबर पे जो he should be decent with the bat. बट अगर वो 8 नंबर बैटिंग कर रहे हैं और अगर आप उनको मैच में सिर्फ 3 ओवर दे रहे हैं, जैसे लास्ट मैच में इवन अगेंस्ट नेपाल ही जस्ट गॉट 3 overs. अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ पांड्या हार्डली गेव हिम 3 or 4 overs इन एवरी मैच. सो अगर आप ऐसे करते हैं, सो आप कॉन्फिडेंस कहाँ दे रहे हैं बॉलर को. सो अगर आप शार्दुल ठाकुर को सिर्फ 3 ओवर करा रहे हैं मैच में, और ही मे नॉट बैट एट ही मे नॉट गेट अ चांस टू बैट, तो फिर क्या फ़ायदा है. उसके जगह फिर या तो आप एक बैट्समैन खिला लो एंड गो विद ओनली 5 bowlers. अगर आपको पांड्या पे इतना कॉन्फिडेंस है तो आप एक बैट्समैन खिला लो, नहीं तो तिलक वर्मा जैसा एक बॉलर खिलाओ जो ही कैन बॉल फ्यू ओवर्स एज वेल, अगर आपको लगता है पांड्या 10 ओवर नहीं डाल सकते तो. सो दैट इज़ समथिंग विच टीम मैनेजमेंट हैज़ टू डिसाइड. अगर आप शार्दुल ठाकुर को खिलाते हैं तो उनको कम से कम, इफ़ नॉट 10 overs, कम से कम आप 6-7 ओवर दें. दैट्स द बेयर मिनिमम यू हैव टू गिव. 6-7 में नहीं तो कम से कम 5 ओवर दें, ताकि ही इज़ डूइंग समथिंग. 3 ओवर देने का मतलब आई फेयर टू अंडरस्टैंड द लॉजिक. सिमिलरली बैटिंग में भी ठीक है, वी नीड हिम, बट यू नीड टू डिफाइन, यू नीड टू सी व्हाट काइंड ऑफ बैटिंग ही कैन डू. तो या तो आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो आते ही बैंग 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 हिटिंग करें, जो एक आप टेल एंडर से एक्सपेक्ट करते हैं. बट शार्दुल ठाकुर इज़ will struggle a bit अगर उनसे आप ऐसे बैटिंग की एक्सपेक्टेशन करते हैं. ही कैन बी डिस्ट्रक्टिव अगर वो कुछ बॉल्स खेलें और एक बॉल को लाइन लेंथ की पता लग जाए, देन ही कैन बी डिस्ट्रक्टिव. बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ प्लेयर हु इज़ कमिंग एट 8 number एंड मे बी ही विल कम टू बैट एट इन 47 or 48 ओवर कि वो सिंगल लेके ही टेक्स हिज ओन टाइम. तो यहाँ एक चीज़ है कि आप एग्जैक्टली शार्दुल ठाकुर से चाहते हैं क्या है. ये द्रविड हो या रोहित शर्मा, दे हैव टू गिव दैट क्लैरिटी. और अगर आपके पास वो क्लैरिटी है, इफ़ यू हैव दैट प्लान, इफ़ यू वांट टू यूटिलाइज शार्दुल ठाकुर, देन इट्स ओके. एट द एंड ऑफ डे व्हाट अ कोच, व्हाट एवरीवन वांट्स कि इंडिया जीते, विकेट आए. ओके. चाहे वो शमी के पेस से हैं या शार्दुल ठाकुर की बॉलिंग से आए, लेकिन वो आपको एक्सपेक्टेशन सेट करना सही है, इंपॉर्टेंट है. सो मेरे पॉइंट से डेफिनेटली डिपेंडिंग ऑन द वेदर, अगर जैसे मुझे लग रहा है दैट इट विल बी मोर काइंड ऑफ 2 pace बॉलिंग पिच, तो डेफिनेटली शार्दुल ठाकुर ही खेलेंगे. और लेकिन अगर वो थोड़ी बैटिंग पिच हो जाती हैं, अगर वो इफ़ बाय गॉड ग्रेस आज धूप निकलती है और आज के मैच में बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, if it is run faced on that wicket, then definitely Sharma will play in place of Shardul Thakur. So yeah, I'm very excited to see
not because it's between India versus Pakistan, but because both the teams are pretty quality side. और डेफिनेटली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का अपना अलग ही क्रेज़ है, बट अगर ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया भी होता, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड भी होता, सो आई वुड हैव लव टू वॉच दोज मैचेस एज वेल, बिकॉज वर्ल्ड कप से पहले आई वॉन्ट इंडिया टू प्ले अगेंस्ट ऑल द टॉप ऑपोजिशन टू to know exactly where they are lacking. So that's all in today's video. Thank you very much for watching. Once again, a humble request, please subscribe to my channel. और कल मैं मैच के बाद आऊँगा, होपफुली इंडिया जीते ये मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट. It will really be a very morale booster अगर इंडिया is able to win a match against such a strong bowling attack. So हम कल मिलेंगे after the match. I will come with a post match analysis review. So till then, thank you very much and have a great day.